So good morning everyone. Today I am further proceeding with the explanation part from the chapter The French Revolution, and here on yesterday's topic we had covered with did women have the revolution? Yes, women had made tremendous changes, like they had made 60 clubs, they had made two recognized clubs. That one was the Society of Revolutionary and second was the Republican. These were the important clubs which were being formed by the women, and women always raised their issues to have the political and economic right. Earlier, they were not having right to education, but later they got the right to get education and even to have their consensus to go with the marriage, um, like arranged marriage, and go with the process of legal divorce. So these kinds of the major changes were took place during the span of time in the French Revolution by the women. So now further proceed. Topic number 5 from the French Revolution, the abolition of slavery. So abolish of slavery या abolition लिखा हुआ है. Abolition of slavery. So abolition of slavery में basically क्या है? First of all, this thing has to be understood that when France was having the power to have control as under the King Louis XVI, then at that time totally the control in the hand of a king. So they required to meet the demand of increasing population. We know the population was increased from 23 million to 28 million. So to meet with the expense, they need sugar, they need tobacco, they need indigo. हमें पता है हमारे भारत से भी इंडिगो जो है वो जाता था प्रोडक्शन हो के, याद है? तो उस टाइम उनको इंडिगो की जरूरत होती थी. सो दे वर नॉट एबल टू, और उनको टी की जरूरत होती थी. यूरोपियन कंट्रीज को बहुत जरूरत होती थी, बट वहां का टेम्परेचर नहीं कि वहां का टी जो है. सो दे डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज टू हैव दिस प्रोडक्शन, और वहां से मंगवानी पड़ती थी. और द टी प्लांट गार्डनर्स जो ऑनर्स थे, दे जस्ट वांट कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, और यूरोपियन कंट्रीज जो ये चाहती थी कि हमारे पास ये टी वगैरह या ये इंडिगो आए, शुगर आए इंडस्ट्रीज और मार्केट की डिमांड पूरा करने के लिए, दैट शुड बी अ लेस इन कॉस्ट, उनकी कीमत कम होनी चाहिए. सो देयर वाज अ ट्रायंगुलर slave trade practices was going. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. स्लेव का मतलब, स्लेव मतलब दास, स्लेव का मतलब क्या होता है? दास. यानी कि फ्यूडल सिस्टम तो चलता ही था. We know feudal system तो practice की में ही था, means the person who is bound to do the work. So what they do? इनकी जो colonies अफ्रीका में थी, France was having their dominance on the African continent, and what they do? Look at your page, previous page, where the map of France is being given over here. So otherwise you will not be able to understand. Just turn your page जहाँ पर मैप दिया हुआ है. मैप कौन सी पेज पे दिया हुआ है? इट इज ऑन पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 राइट हैंड साइड में आपको मैंने मर्सियस दिखाया था. मर्सियस दिखाया था मैंने, जहां मर्सियस सॉन्ग था उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो बर्डॉक्स लिखा हुआ. बर्डॉक्स लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पर. अगर आप मैप देखो, एग्जैक्टली द मैप ऑफ, this is exactly the map you can see on page number 9. अगर इसी तरह का है, yes ma'am. हाँ. सो अगर आप बर्डॉक्स देखिए तो आपको वेस्टर्न साइड पर यहाँ पर बर्डॉक्स मिल रहा होगा. मिला? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर आपको Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. आपको डेंटस नाम का है, डेंटस है वो आपको देखिए बटॉक्स के ऊपर देन आपको इधर से डेंटस मिलेगा, तो देखिए बटॉक्स के इधर आपको डेंटस मिलेगा, मिल रहा है? Yes. Yes, ma'am. सेंटर में Yes, ma'am. मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. बेसिकली मैं स्लेव ट्रेड की मैप क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि these all are the border colony, border areas. ये बर्डॉक्स और रेंडल्स में these were the important sea route trade centers. यहाँ से क्या करते थे जो बिग बिजनेसमैन ऑनर्स थे, those who were making the trade practices, they sent their troops, they sent their ships to have, देखो यहाँ से फ्रांस से शिप जो है कौन सी एरिया से, टेंटस एंड बर्डॉक्स से जाते थे और वो जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका की उन कंट्रीज में जहां उनके पास क्या है, उनकी यूरोपियन कॉलोनीज हैं। अब अफ्रीका की कॉलोनीज ओवर हियर इन, यू कैन से इन अफ्रीका, यूरोप की फ्रांस की कॉलोनीज इन अफ्रीका, वहां से ठूस कर, हिंदी में वर्ड यूज कर रही हूं मैं, भर के शिप्स को 3 मंथ्स के लिए सॉल्व करके लेके जाया जाता, मतलब सेल करके अटलांटिक ओशन के थ्रू अमेरिका में लेके जाया जाता था टू मीट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटेशन and to provide the slaves at very reasonable or low cost, so that the product which they require in this country they can get it at a cheap rate, and this was known as a triangle slave trade. This was known as triangle slave trade. और यहाँ से product, is it okay? कोई doubt? No, ma'am. हाँ जी, ये स्लेव ट्रेड जो था इट वाज बिकॉज द फ्यूडल सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड, और जब नेशनल असेंबली बनाई गई 1792, उसमें भी एक लॉन्ग डिस्कशन किया गया कि वेदर वी हैव टू गो विद द प्रोसेस ऑफ दिस स्लेव ट्रेड, तो उसमें बिकॉज नेशनल असेंबली के मेंबर्स सारे के सारे कौन थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस थे, तो बाकी सारे पॉइंट अपना ये चीज कर गए कि अगर हम इस चीज को उठाएंगे तो वो अपनी सपोर्ट हमसे वापस ना ले ले, और हो सकता है नेशनल असेंबली के अंदर ड्राफ्ट ही फ्रेम ना हो। बात समझ आ गई भी? वो सारे रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही बना रहे थे, वो सारे रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही टैक्स फ्री कर रहे थे, और अगर वो कहें कि दूसरे लोग कहें कि स्लेव ट्रेड बंद करवा दिया जाए बिकॉज इट इज नॉट गुड, तो उस चीज को उन्होंने साइलेंट रहे, उस टाइम नहीं हटा। ये हटा, स्लेव ट्रेड कब हटा, स्लेव ट्रेड और फ्यूडल सिस्टम हटा 1794 में जब कन्वेंशन आया जैकोबिन क्लब के टाइम पर। सो 1794 में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, और उसके बाद इट वाज ओनली फॉर 1 decade. It was only for 1 decade. When Jacobin terror was there, when Jacobin was guillotined, और उसके बाद डायरेक्टरी रूल भी बहुत अच्छी तरह नहीं चल पाया. So after that, Napoleon Bonaparte had come, and he want to become as a modernizer or creating the liberty and showing the liberty. He has again introduced that thing. लेकिन फाइनली जो है अबॉलिशन जो है मतलब 1804 में रीइंट्रोड्यूस हो गया, दोबारा इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सो रीइंट्रोड्यूस होने के बाद इसको फाइनली कब खत्म हुआ, फाइनली slavery was abolished in the world war in France in 1848. So finally abolition of slavery was done in 1848. Is the point is clear to everyone? By doubt, please, if there is any doubt, please ask. Now come to the further explanation that revolution and everyday life. So what had happened in that?
I just going to erase it. The revolution and everyday life. Now listen, what major changes has been done in that? Basically, क्या changes हैं? Earlier, people of that France, they were not having any kind of right. But when whether newspapers, because पहले क्या था, basic points देख लीजिए यहाँ पर. पहले क्या था, censorship था. Censorship word सुना हो. Censorship means no one is allowed to publish or write anything against the ruler's consensus. रूलर की कंसेंस होगी, राजा का बिल होगा तो वही चीज छपेगी, नहीं तो नहीं छपेगी. But when the provision of National Assembly was there, then people were this censorship was not existing. इसको abolish करवा दिया गया National Assembly में. People were free to speech and express. People were free to make their association. That is why आपने देखा होगा जो इसके priest थे church के Abbasius, so from the priest family, he has also written the pamphlet called what is third estate. ये हमने पढ़ा था. तो इस तरह से बहुत सारे journals, बहुत सारे letters, बहुत सारे articles, बहुत सारे books which were being widely spread in the France, even in the cities as well as in the countryside. So the awakening was being started in the Europe, or in, we can say, France, with the abolition of the censorship. Now king was not having any kind of control to stop these practices, and people were becoming aware. New political thinkers has also given their idea, and a declaration of rights to men, that also proclaimed by the France people to have the independence and to have the taste of a free country and have or enjoy all the natural rights. So France, from where they traveled rapidly from urban area to the countryside area, ये सारी चीजें फैलती चलेगी और लोगों के अंदर एक चेतना जो है वो आती चलेगी. So freedom of press, सबसे पहले जो थी freedom of press, also opposing the view that could be expressed. Each side sought convenience, other position through the medium of print, play, songs, journals, articles. ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के अंदर feeling जो है freedom की लेके आते हैं. This was that could grasp, identify ideas such as liberty and justice. In plays, songs के साथ लोगों के अंदर idea of liberty and justice आना start हुआ. Then हमने और point पूरा consider किया था, that was end of feudal system. ठीक है, abolition of censorship, privileges on the basis of birth, abolition of feudal system, abolition of you can say this slavery practice by the convention. So all these parameter has given the revolution in everyday life of France people. So it also make the women also to raise their voice and go in the path of getting the education. हम सारा ही करके आए हैं. So France has turned into the new era. France has turned from the monarchy to the republic through the different chapters, like state journal के बाद national assembly में rights दिए, फिर convention में feudal system को खत्म करवाया, convention में censorship जो है उसको किया, slavery को खत्म कराया, और directory rule जो है वो process बहुत सारे आए. Women's ने भी बहुत अपना contribute किया, और end में जो आया person, that was military dictator Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte जो है, he has brought himself as the emperor of France in 1804. So after this instability के बाद instability in France due to directory rule.
Military dictator. Military dictator Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, when he became the ruler of France, he has introduced slavery again. उसने क्या क्या किया? पहले उसके पॉइंट्स बताते, फीचर्स बताते, नेगेटिव पॉइंट बाद में बताते, पहले फीचर्स बताते. He placed member of his family. All the important places were given by the Napoleon Bonaparte in France only to his family members. First point is clear. Then Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. उसने अपने आप को क्या दिखाया लोगों को कि he will be the modernizer of Europe. He introduced many laws. कौन-कौन से laws ये उसने introduce? Such as protection of private property, number 1. Number 2, uniform system of weight and measure. Number 3, provided by decimal system. And many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. He himself considered that he is the liberator and a liberalizer for the people and giving the freedom for the people. Napoleon army होना क्या शुरू हो गया? धीरे धीरे हर जगह, हर कोने पे, हर सड़क के, हर स्ट्रीट के कोने पे होते क्या था? ये नेपोलियन के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, they were standing. वो हर जगह खड़े होते थे. So people themselves feel suffocated कि हर जगह तो आर्मी रूल है, आर्मी खड़ी है, तो we are not free. So Napoleon armies come in the view everywhere as invading force. He was finally defeated. अंत में इसका अंत कब हुआ? In the Battle of Waterloo in 1815. He became as a liberalizer, but he spread his army everywhere, even in the countryside, in the roads, in the streets, everywhere. And finally, when the Battle of Waterloo was there, then he was a liberator. Many of his measures were carried the revolutionary idea. उसने बहुत सारे measures किए जिसके कारण revolutionary ideas बहुत सारे आने लग गए. Liberty, modern laws in other part of the Europe, and impact of people after long time of Napoleon. Napoleon ने equal weight and measure system, decimal system किया. Property rights जो था, private property, protection of private property किया, क्योंकि लोगों ना एक दूसरे पे अटैक ही करना शुरू हो गए थे, तो वो भी उसने प्रोटेक्ट किया. So basically he has done these things. So the idea of हमें basically मिलता क्या है? What is the legacy? Legacy means result. अगर वर्ड आ जाए, what is the legacy of French Revolution? तो result क्या है French Revolution का? Number 1, liberty, idea of liberty. Number 2, idea of democratic rights. These were the important legacy of French Revolution. Idea of liberty and idea of democratic rights. Then the spread from France to the rest of, ये idea सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रहे, ये idea हर जगह गए, ये आइडिया पूरे यूरोप में गए. इनफैक्ट यूरोप से बाहर हमारे भारत में भी आए, और हमारे भारत के 2 पर्सन, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, they were very much inspired from the idea given by France as a revolution. टीपू सुल्तान ने जो हमारी लड़ाइयां लड़ी उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो भी इसलिए कि अगर फ्रांस में लोग इंडिपेंडेंस चाह सकते हैं तो हम अपने मराठा, अपने महाराष्ट्र पूरा एरिया जो जितना हमारा प्रोविंसेस है, व्हाई वी शुड गिव आवर एरिया टू देम. तो टीपू सुल्तान ने और राजा राम मोहन राय, they also appreciated the idea, accept the idea of French Revolution. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. Who were inspired from the name the Indian who were inspired by the idea of French Revolution? तो कौन थे? टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय. So this basically the practices which was being changed with the span of French Revolution, that was abolition of slavery, abolition of feudal system. Slavery द्वारा introduce हो गई थी, नेपोलियन ने आगे कर दी. Napoleon has introduced slavery. Napoleon has introduced censorship also. Censorship भी उसने दोबारा introduce कर दी थी. Got it? So censorship और slavery उसने दोबारा introduce कर दी क्योंकि वो अपना control करना चाहता था. So France has made many ups and down, faced many ups and down during the process,
but actually the basic change is they never went in the hands of monarchy again with this process. Point out. So colonial people network of the ideal freedom from bondage and the movement create a sovereign nation. All the countries becoming the sovereign. This France also become the sovereign. India's person, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai are the two examples who responded the idea coming from the revolutionary France. Is it clear up to this? This is the last point which I had explained you. Now you just ask your questions. I'm going to repeat the points of legacy of French Revolution was number one, they ensure liberty to all. Number two, the idea of democratic principles, natural rights, freedom to all, opportunities to all, and a feudal system. End of censorship. All these ideas were considered to be as a legacy of French Revolution. ये सिर्फ मैंने हेडिंग दी है, इनकी एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखेंगे, कोई डाउट?